this YouTube live session, the fifth we have held so far from the Agri Collaboratory called the Community Circle. My name is Nipun Mehrotra. I'm the co-founder and the CEO of the Agri Think and Do Tank that we started 5 years back, which is designed to focus on small farmers, but by bringing together a larger ecosystem that is needed to solve several complex issues that our farmers face. Uh, we focus on digital technologies, we work on the ground, we try and take some of that learnings up to policy, to drive policy interventions as well. And we have covered some of the work that we have done, as well as our views on how can digital agriculture go forward through several workshops, through the work we did with the G20 a couple of years back, and in many other forums. We have been holding these community circles for a few months now to have a frank and an open conversation between different stakeholders who are all critical to solving complex problems. Now, one of the challenges that we've been working on is how do you holistically work on agri-finance? And when we say finance, it also means money for the farmer, money for the value chain, money from the bank to the value chain, money from the bank or from the lenders to the farmers when they need it, etc. So how do you accelerate the flow of money through an agri value chain, but in a manner that is environmentally sustainable, in a manner that is commercially viable, and therefore can be taken to millions of farmers across the country, right? And in a manner that it benefits everyone. It benefits the farmers most certainly, but it benefits every part of the ecosystem, notably agri-tech startups who very often struggle to scale, but also the buyers, also other participants in this ecosystem, etc. So we have been working on one such case at one project in Nasik, in Maharashtra. We picked sugarcane because we think sugarcane is an important crop for the country. But I think with reduced acreage, we can produce the same amount of sugarcane that is needed, both for bioethanol or for sugar. So the same quantity of sugarcane we can produce by using less acreage, by using 30-40% less water, significantly less amount of pesticide and fertilizers, etc. Therefore, rejuvenating the soil. So therefore, getting the same output, but with significantly lower inputs that go into the crop. And we have now developed the model to a point that this is working with several hundred farmers across 550 acres. While we have had this conversation in the past with you a few months back, and that was the first introduction to what we call AGFX, Project AGFX, Agri-Finance. Today's conversation starts to peel the onion and goes deeper. So today's conversation is with people on the ground, and you will hear their voices. You will hear farmers. You will hear people who are supporting the farmers. You will hear people who are helping or are actually watching this transformation happen on the ground. And you will also see some video evidences of what we have learned over the last 10 months, etc. And then we will also touch upon an important aspect as to how is the solution, what is the secret sauce behind the solution, and more importantly, how can we scale it, right? So I'll bring in different people as we go forward into this conversation. So stay with us. Thank you once again for joining us, and look forward to your views, your comments, your questions on the chat box, and then we'd love to see if we can answer them. So I'm going to now introduce our first guest and then bring him on, Jagdish Patel, right? Jagdish Ramdas Patel. He is the retired Deputy Director of Agriculture from the Nasik district. He has worked with the government for several years, from 1991 onwards. He started with the government. He studied
he's a master of science in agriculture, and he has worked in several areas. I met him a few days back, and he's now experimenting with sericulture, right? Which is a new Yes. interesting crop and a new interesting area for him to work on. But at this point, Patilji, I'd love to hear your thoughts on what are you seeing on the ground in Nasik at a macro view, right? How many Yes, farmers sir. are there? What are the challenges that they're facing? Sugarcane ke liye, particularly if you can talk a little bit about sugarcane, because that is a crop that we are interested in. But feel free to share your thoughts. Patil ji, over to you. नमस्ते सर जी। एज आप जैसे आपने कहा, नासिक में शुगर केन बहुत अच्छा क्रॉप था। यहाँ 3 कोऑपरेटिव मिल थी, शुगर मिल्स थी, और लैंड होल्डिंग भी बहुत अच्छी तरह से थी। अब पहले 10 साल पहले अगर हम जाएंगे, अभी 1975 से यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ नासिक में। गिरना सहकारी कारखाना, एक वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, वसंत दादा शुगर मिल, और ये फिर प्राइवेट में ये द्वारकाधीश शुगर फैक्ट्री। ऐसा एक ही डिस्ट्रिक्ट में ये 3 कारखाने हैं शुगर मिल्स है। और लैंड होल्डिंग भी बहुत थी, इसलिए लोग शुगर केन प्रेफर करते थे। वाटर टेबल भी अच्छा था, लेकिन बाद में वाटर टेबल कम होने की वजह से और पानी ज्यादा होने लगने के कारण से शुगर केन एरिया कम होने लगा, और मिल्स का भी फिर चलाना मुश्किल हो गया। तो अभी 2 मिल्स तो बंद हो गए हैं, फिर भी एक ही मिल चालू है, फिर भी उसको उतना गन्ना मिल नहीं रहा है। फार्मर्स शिफ्ट हो रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन, फ्रूट क्रॉप्स की, वेजिटेबल्स की तरह जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप की वजह से वो अभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद शुगर मिल जो है, उसको तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है, उनके लिए अभी गन्ना उतना आना मुश्किल है। तो फिर इसीलिए ये गन्ना और शुगर मिल दोनों के लिए ये क्रॉप सस्टेन होना बहुत जरूरी है। क्रॉप सस्टेन होने के लिए फार्मर्स को भी उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी मालूम होना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा पानी यूज करने से या ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करने से यील्ड नहीं बढ़ता है। ऑप्टिमम टाइम पे देना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए इस फार्मर्स को ट्रेन करना, उसके लिए वो क्रॉप का कल्टीवेशन की ऑप्टिमम पीरियड से जो कुछ टेक्नोलॉजी मांगते हैं, जो कुछ उस पे इनपुट डालने मांगते हैं, वो उनको फैमिलियर कर देना और उनका नॉलेज बढ़ाना, ये बहुत जरूरत हो गया है। उससे ये वैल्यू चेन भी चल सकेगी और फार्मर्स भी सस्टेन हो सकेंगे। मैं आता हूँ, ये सोल्यूशन के ऊपर आता हूँ मैं, पाटिल जी। बट आप ये बताइए, वहां पर कितने शुगर केन फार्मर्स होंगे नासिक में? आज आज की तारीख को देखेंगे तो सिर्फ 1000 एकड़ के नजदीक का एरिया सिर्फ शुगर केन का हो गया है, जो द्वारकाधीश के का एरिया में देखा हम सोचेंगे तो। क्योंकि जो पहले 15,000 तक था, वो अभी सिर्फ 1000 तक आ गया है। बाप रे। इसलिए कारखाना जो शुगर मिल है, उसको बाकी दूसरी जुरिडिक्शन में जाना पड़ रहा है, यानी फार्मर शिफ्ट हो रहे हैं, और उनका ठीक है। और पहले पाटिल जी 15,000 एकड़ थे, बट यील्ड जो थी, जो आउटपुट था, दैट वाज आल्सो हायर। जो यील्ड, जो टनेज पर एकड़ जो पहले मिलती थी, वो भी हायर थी ना, वो भी ज्यादा आती थी आजकल के मुकाबले। सर वो भी 2 जगह पे है कि उस टाइम पे जो कुछ ग्रीन मैन्योरिंग या बाकी सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन की वजह से भी यील्ड ज्यादा था। अभी क्या हो गया है, यील्ड यील्ड का मानो एक 20, पहले 40-45 तक आता था, अभी 25 तक आने लगा है, यानी 20 टन्स पर एकड़ का यील्ड कम होने लगा था। फिर भी कुछ भी फार्मर्स है जो सब टेक्नोलॉजी जान के करते हैं, वो 65 तक जाते हैं, 65-70 तक। लेकिन वो बहुत कम है, एक 10-15%, 10 to 15% तो सिर्फ उतना एवरेज, ले सकते हैं, हाँ, लेकिन ऑन एन एवरेज 25 तक
प्रोडक्शन है। अच्छा, तो एवरेज 25 है, पहले 40-45 होता था, 45 होता था, नाउ इट हैज कम डाउन टू 25. एंड व्हाट ही इज आल्सो सेइंग इज दैट the best in class, the best farmers in that same area are getting almost 60-65 tons, even today, right? Because they have knowledge, they have access to money, they have access to understanding and other things. Chetan ji, मैं आपके पास आता हूँ. Chetan is actually a very important part of our project. He's a local entrepreneur. He's a youngster from a village in Nasik. He has been a farmer for many generations. उसने काफी सालों से चेतन ने और उनके फैमिली ने खेती बाड़ी करी है, शुगर केन भी उगाया है शायद चेतन जी, और भी चीजें जी उगाई हैं एक्सेट्रा. एंड तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो फार्मर्स की जो कंडीशन है, फार्मर्स की जो सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड, उसके बारे में कुछ बताइए हमें. जो फार्मर्स को भी जो फील्ड पे हम लोग जाते हैं सर जी, फार्मर्स को जो भी अभी जो मतलब बहुत साल पहले जो कोई भी मतलब पौधों पे कोई रोग आता था तो फार्मर को उतना समझ नहीं आता था कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए. तो अभी ये टेक्नोलॉजी के आने की वजह से वो लोग थोड़ा सतर्क हो जाते हैं. ओके, और उनके कॉस्ट के बारे में बताइए, मतलब, और अभी और और जो डिजीजेस आती हैं उसके बारे में कैसे फेस करते हैं, उनके जो आमदनी होती है पहले कितनी होती थी, अब कितनी रह गई है, उसके बारे में कुछ बताइए चेतन जी. जी, तो अभी अभी जब भी मैं फील्ड पे जाता हूँ फार्मर से बात करता हूँ, जो इनका बेंचमार्क लेता हूँ कि पिछले साल यानी उसके पिछले साल 2024 में 2023 में आपने क्या किया था, अगर हम्म. आपने शुगर केन लगाया था तो हम्म. आपने कितना कॉस्ट, अपना कितना खर्चा आया था, और हम्म. कितने एकड़ में आपके आपने शुगर केन लगाया था, उसमें लेबर कॉस्ट, अपना फर्टिलाइजर कॉस्ट, वो सब उनसे पूछता हूँ मैं. तो क्या बोलते हैं आपसे? तो जो पिछला वो लोग, हाँ पिछला जो लोग बताते कि उनको जो उनका मैनेजमेंट सही नहीं था, मतलब हर फार्मर के दिमाग में क्या लग गया था कि अपने को गन्ने को पानी मतलब वाटर ही चाहिए. हम्म. हम्म. उसका वाटर का उन लोगों के पास नियोजन नहीं था कि वाटर, ऐसा नहीं कि मतलब हर जो भी शुगर कैन लगाने वाले फार्मर है उनको ज्यादा ही पानी चाहिए, वाटर चाहिए, ऐसा कुछ रहता नहीं है. तो अगर अपन ने सही से नियोजन किया उसका तो अपन गन्ना लगा सकते हैं. पहले उनके दिमाग में वही था कि अगर मेरे पास पानी नहीं है तो मैं नहीं गन्ना लगाऊंगा. अभी वो मतलब ड्रिप सिस्टम से करके वो लोग अभी बढ़ रहे हैं आगे आगे. बढ़िया बढ़िया. So what Chetan is saying, for the benefit of others who may not have caught on, is that the farmers have mistakenly assume that the only way to grow sugarcane is by flooding the fields, or through an excessive use of water. And but in reality, uh, it has been demonstrated by many farmers in that region that even with a lesser amount of water, sugarcane is a very valuable and a very viable crop, right? And पानी तो वैसे भी कम यूज करना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी वैसे भी हो रही है, तो अच्छा भी है कि अगर लोग नहीं मैनेज ड्रिप इरिगेशन लगाए. हाँ, बताइए बताइए मैनेजमेंट चेतन. अगर अच्छा किया तो कम, मैनेजमेंट अगर वो पानी का मैनेजमेंट अच्छा किया तो कम पानी में भी शुगर का अभी निकाल रहे हैं, ऐसे भी फार्मर है अभी अपने प्रोजेक्ट में. सही बात, सही बात. आपका कोई और आप, एक्सपीरियंस है अपने नहीं, बताइए चेतन जी, आप कुछ बोल रहे हैं. जी आज का ही एक्सपीरियंस, आज का ही एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको. जो शुगर कैन का जो मतलब एरिया रहता है, जो बारिश के टाइम में शुगर कैन के शुगर कैन में ऐसा मतलब उसको तन बोलते हैं, वो अंदर अंदर फैलता है शुगर में, शुगर कैन के पौधों के अंदर, और वो पौधों को लपेटता है. तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब वो हार्वेस्टिंग के करने हाँ. वाले जो लेबर रहते हैं वो भी मतलब फार्मर से कॉस्ट का डिमांड करते हैं कि नहीं ये तुम्हारे फार्म में ऐसा ऐसा है, हमने अंदर जाएंगे. उस टाइम में फार्मर को ज्यादा मतलब कॉस्ट जाती है. तो अभी फार्मर से हम बात करते हैं कि जब तक हार्वेस्टिंग के टाइम में आपने को प्रॉब्लम आएगा, उससे पहले आज ये क्या करने का है ये सोल्यूशन हम लोग उनसे बताते हैं. तो आज भी एक फार्मर ने मेरे मतलब मैं वही फील्ड पे था, तो उन्होंने ड्रोन से स्प्रे किया. तो उन लोगों हम्म. को भी लग रहा है कि नहीं आगे जाके तकलीफ होने से आज ही कुछ अच्छा
कर लेना चाहिए। अभी फार्मर भी एग्री होने लगे हमसे। तो आप जो समझा रहे हैं उनको, वो बात सुनने लगे हैं, आपको आप ट्रस्ट करते हैं, जो आप बोलते हैं वो आप बात मान रहे हैं। ये है जी, ना चतुर? मैं खुद उनके प्लॉट जी पहले मैं उनके प्लॉट पे 5 बार जाता था। आज वो मुझे दिन में 2 बार फार्मर मुझे कॉल करते कि बढ़िया, आप आ जाओ एक बार देख लो क्या हो रहा है। बढ़िया। आज वो हाँ, मुझे खुद कॉल करते वो लोग। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि जब बिगेस्ट जो सबसे बड़ी समस्या जो फार्मर की होती है वो है ट्रस्ट। वो आप ट्रस्ट नहीं करता है, अक्सर जी उसको जी ये नहीं मालूम होता कि किस पर ट्रस्ट करें, किस टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट करें, एटसेट्रा लाइक दैट, राइट? सो आप ठीक कह रहे हैं। Manisha, let me come to you, and then I want to go to Patel after that, if you can get back Patel. Uh, Manisha, just to introduce for everyone, is a senior agronomist. She is working with a startup called Farmitopia in Bangalore and has covered in across many states. She holds a master's in agri-business management and is very, very deep in agronomy. She has worked with the government as well, and she's very intricately involved with this project. So I'd like to, Manisha, for you to help us understand the kind of agronomist issues, the kind of practices that the farmers typically end up following. What is it that you then guide them on, and what is their reaction? I'm still not talking about the solution right now. We'll talk about the solution in a little bit, but let's just understand from your angle what kind of practices that the farmers struggle with, your experiences in that. And then I want to ask Patel ji about challenges on the mill side, right? Not just the farmer side, because we have to keep everyone into account, right? But Manisha, over to you. Hello, sir. Thank you for the opportunity. So, um, as थोड़ा you सा asked for the volume a challenges, little bit, Manisha, if you can speak up a little bit, just थोड़ा सा. okay, is it clear now, sir? It is clear, but your volume is a Yeah, little okay, low, so just shout a little bit. okay. So, the problem faced by the farmers, it's like having the knowledge of growing with the traditional practices and all. Before, as you said, as you asked, like before they used to get 40 tons and now they are getting only 20-25 tons. It is due to the climate change and also the soil degradation. All these throughout these years, the changes have brought the productivity low. So for this we have to suggest a management practices. So the farmers now are not able to get the management practices right, and they are not able to receive the right input at the right time, and also the right advice. So each and every farm for example, if we take the Nashik as an example, there the soil conditions are different and the climate is different. So each and every place the growing conditions will vary. So according to that we have to plan and we have to cultivate the crop according to the situations. So the management practices, it differs, and also the right practices for each and every farm also differs. So and then coming to the So the first yes, sir. part, Manisha, before you go on, the first part, what you're basically emphasizing is the need for personalized agronomy, personalizing it to the Exactly. farm's requirement, doing a soil test, and then deciding what is it that this farmer needs, right? Exactly, sir. That's the Exactly. first part, right? Okay, go ahead. Go ahead Yeah. now. So, through our experience, when we have done a baseline survey of 1500 farms, so we found that farmers are facing the problems of not having the awareness of new technologies coming in and new practices which the other farmers, like you have said, the same farmer in in the same region is getting 60 to 70 tons, but the Mm, others are getting only 20 to 25 or just reaching to 35. That's it. What is the difference and what is the gap? So that we have to observe and then provide a personalized advisory to them. So that was the one. And we have also observed that uh, identification of risk is not observed by the farmers immediately. mm, That risk management should be done immediately by the farmers, and they have to follow the precise advisory on their farms to solve the mm, solution, to solve the mm, problem, sorry. Yeah. And
the other thing is like to improve the yield, like as I've mentioned about the climate change and the soil degradation, the practices have to be changed. We have to follow some of the advanced technologies, and also the proven whatever the research has been done on the sugarcane fields, on the labs and all, that has to be brought to the farmer level, and that has to be practiced on the farm. Perfect. So poor practices, making sure that their practices are customized, making sure that farmers follow the practices. These are some root causes which you are highlighting, Manisha, right? Exactly, sir. Uh, Patil ji, I want to ask you two questions. You've been in the government, right? You have worked with farmers, you've worked with that region for a while, right? So I really want you to touch upon two things. Why is it that some farmers are able to get 65 and the others get only 25? That's one question. Because everybody is surprised with that very often. कि मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब किसी को 25 मिलता है, किसी को 65 मिलता है? क्या फर्क क्या है? Because नॉलेज अगर नॉलेज है तो नॉलेज में तो आप देखिए गवर्नमेंट में सबको बताते होंगे कि आप ऐसा करिए वैसा करिए. The same practices must be given to everyone. So that is one question. The second question is, and you can answer them both together, is really the challenges that the mills face or the other people face. So farmers' challenges, I think, are well understood. But in our view, farmer cannot be a standalone person, right? He is struggling because there are people around him who also have the same challenges or similar challenges. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए पाटिल जी, but over to you. बिल्कुल। अभी पहले इस पे आते हैं कि यील्ड डिफरेंशिएट क्यों है, हाँ. जो कि फार्मर्स का मेन कंसर्न क्या रहता है कि शुगर केन ग्रोवर्स जो है कि अभी शुगर केन लगा दिया मैंने तो मेरा काम हो गया, लगाने के बाद सिर्फ पानी भरना है, इतना ही वो ध्यान पे देता है। जो कुछ ऑप्टिमम प्रैक्टिसेस है कि उसकी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में जो इनपुट डालना है उतना डालना ही काफी नहीं होता, तो उसकी टाइम पे ही डालना ये भी बहुत मायने रखता है। दूसरी बात, ज्यादा पानी देना भी उसके लिए अच्छा नहीं है। शुगर केन क्रॉप के लिए पानी देना है ये वो समझते हैं, लेकिन ज्यादा पानी देने से भी यील्ड में कम हो जाती है, वो ये मानते नहीं। उसको लगता है चलो आदमी को बता दिया, उसने पानी लगा दिया, पानी भर गया है, वो अंदर भी जाता नहीं है, तो फिर इस तरह से अभी खेती नहीं हो सकती। खेती के लिए जो जानकार फार्मर्स है वो ऑप्टिमम टाइम पे इनपुट तो डालते ही है, लेकिन कुछ स्प्रे करना है तो वो उसकी भी जिम्मेदारी लेते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं। तो ये तो गन्ना जो है वो ग्रास के अंदर आने वाला पीक है, उसको जितना मैनेजमेंट किया उतना वो देता है। फर्क सिर्फ उसके फार्मर्स की मेंटेलिटी का है। अगर उसको कोई पीछे रहा आदमी और उसको जानकारी देते रहा कि आपको ये करना है, कुछ फार्मर्स क्या है कहीं भी जाके वो नॉलेज गैदर करते हैं या किसी फार्मर्स को बोलते हैं या किसी अच्छे ऑफिसर्स के पास जाते हैं या शास्त्रज्ञ के पास जाते हैं, विद्यापीठ के पास जाते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाते हैं और उनका काम चलता है। लेकिन कुछ फार्मर्स जो है वो सिर्फ काम गन्ना लगा दिया हो गया, इस तरफ से जो करते हैं, इसलिए यील्ड में डिफरेंशिएट आता है। मैं समझ गया। बिफोर यू टू द पाटिल जी, बिफोर आप आगे जाएं उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि देखिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट आप तो सबको वही चीज बताते हैं, जो केवीकेज हैं, किसान लेकिन कृषि विकास केंद्र जो है, वो जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं वो तो सबको वही इंफॉर्मेशन देते हैं ना। नहीं, इंफॉर्मेशन सही जाती है, लेकिन इस्तेमाल करना जो है वो फार्मर्स पे डिपेंड रहता है। वो ये इस्तेमाल जो उसको इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन उसने लिया या नहीं लिया ये उस पे निर्भर रहता है। हर फार्मर अपने क्रॉप में उतना टेक्नो सेवी नहीं रहता। कुछ फार्मर्स ऐसे रहते हैं कि मैंने क्रॉप लगा दिया, किसी को बता दिया, पानी डाल रहे हैं,
तो फिर वो जानकारी अगर लेता ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट हर फार्मर्स के पास नहीं जा सकेगा। फार्मर्स को उसको क्रॉप लेना है तो उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी नॉलेज हमें मिलता है, बाकी के नजदीक के फार्मर से भी अगर नॉलेज मिल रहा है तो हमने उस तरह से करना चाहिए। वो फार्मर्स पे डिपेंड रहता है, लेकिन हर फार्मर वैसा नहीं कर सकता, इसलिए फार्मर डिफरेंशिएट आ जाता है। रही दूसरी बात अभी शुगर मिल की, तो शुगर मिल के लिए भी बहुत चैलेंजेस है। चैलेंजेस पहले यही है कि जो कुछ फार्मर अभी कम हो रहे हैं, वाटर टेबल कम होने की वजह से हो या यील्ड न आने की वजह से हो या ज्यादा मुनाफा न होने की वजह से हो, फार्मर क्रॉप शिफ्ट पे जा रहे हैं। लेकिन ये तो कारखाने के लिए बहुत चैलेंज है कि जो उनका एरिया है उसके नजदीक अगर उसको गन्ना मिलेगा तो उसका ट्रांसपोर्ट कम हो सकेगा, और उसकी जो उनका उतारा बोलते हैं हम, गन्ने का जो ईल्ड चाहिए शुगर केन के, तो रिकवरी जो है वो रिकवरी भी उसके लिए मायना रखती है, अगर जल्दी नजदीक एरिया से अगर उसका ट्रांसपोर्ट हुआ तो। लेकिन होता क्या है, उनका भी एरिया शिफ्ट होने लगा है। जो कारखाने के नजदीक का एरिया जो गन्ना वो क्रॉप लेते थे, वो शिफ्ट होने की वजह से कारखाने को दूसरे एरिया में जाना पड़ रहा है। और सही बात। दूसरा एरिया में गया तो फिर वहाँ सब मैनेजमेंट के लिए ज्यादा लोग लगेंगे, उनके लिए इनपुट देना है, तो वो खबरदारी लेने के लिए इनपुट्स वो डालता है कि नहीं, उसके लिए वो स्टाफ को भेजने के लिए उनका भी खर्चा बढ़ता है। तीसरी बात, जो फार्मर्स को इनपुट दिया है, जो उनको टेक्नोलॉजी दी है, उस टेक्नोलॉजी देने के बाद उसके यहाँ फार्मर्स के यहाँ उस कारखाने के लोग जाने के बावजूद, और उनके लिए उन्होंने कुछ वो क्रॉप ये ट्रेनिंग भी अरेंज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगले साल अगर वो शुगर केन का फार्मर शिफ्ट हो गया तो उनके लिए उनका टेक्नोलॉजी देने के बावजूद ये बहुत लॉस होता है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो एरिया उन्होंने लेके रखा है वो उस शुगर केन के लिए सस्टेन हो। जो फार्मर शुगर केन ग्रो कर रहा है वो अगले साल भी शुगर केन ही ग्रो करे और वो उनको ही शुगर केन उनके शुगर मिल में आए। ये उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। वो टाइम पे आना भी बहुत बड़ा जरूरत है। और अगर इस एरिया में उसने अगर 1 एकड़ पे वहां 40 टन आ रहा है उनका यील्ड, अगर 55 टन आ गया तो 15 टन भी इंक्रीज हो गया, तो उनके लिए वो भी अच्छा रहता है कि एक ही नजदीक के फार्मर से और कम फार्मर में उनका यील्ड बढ़ता जाए, रिकवरी भी बढ़ती जाए और टनेज भी ज्यादा मिलता रहे क्रशिंग के लिए। सही बात। So very briefly, Patil ji said that the difference between farmers is because they don't follow the right practices very often. They are not motivated enough. They may not understand some of the practices well enough, or they don't get the support on the ground. That's one part. The second part is the issues of the mills. The mills struggle because their acreage is coming down. The farmers have shifted crop to horticulture or to something else. और इवन द जैगरी यूनिट्स नहीं पाटिल जी, जो फार्मर्स जो हैं वो अपना गन्ना वो शुगर मिल्स की जगह वो जो गुड़ बनाते हैं, जैगरी यूनिट्स जो हैं वहां पर बहुत सारे आ गए हैं, वो वहां पर डाइवर्ट कर देते हैं। ये भी है ना? और बिल्कुल, और उसमें भी वो काफी ज्यादा अच्छा पैसा ये भी एक कमा लेते हैं। प्रॉब्लम हो रहा है सर। शुगर केन पहले जो बिल्कुल, शुगर केन का पहले सिर्फ शुगर मिल के यहाँ ही जाता था। अभी जो कुछ गन्ने के जूस के यूनिट्स भी बहुत बढ़ लगे हैं, जागरी के यूनिट्स बढ़ने लगे, तो फिर कंपटीशन कारखाने की जगह ये भी आ रही है कि गन्ना दूसरी जगह पे जाने लगा है। तो फिर कारखाने के लिए ये तो सिर्फ कंपटीशन ही हो गई है। अगर नजदीक कोई जागरी यूनिट्स हो गया या गन्ने का जूस वाले जो है सिटी में आने लगे, तो फिर एरिया कम पड़ रहा है, टनेज कम पड़ रहा है। कारखाने के लिए बहुत चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। सही बात। This was the important part of the whole conversation today, which is just understanding on the ground what is the situation, what are the farmers facing, why are they not able to scale up? Because sometimes the farmers have knowledge because they didn't cover this, but there are many startups which provide WhatsApp information to farmers on a regular basis, right, Shrikala? They support information, they provide agronomy,
But in spite of all that information being available, the farmer is not using it and the farmer is not leveraging or benefiting from it. So Shrikala, as I wrap up this section, and Shrikala is the founder of the company Farmitopia, and she is very deeply engaged. She has been in agriculture now for the last 15 years. She comes from a corporate background. She's worked in Wipro for many years, and she's now made this transition to agriculture. Um, but in your with your assessment, Shikala, are there anything else that's missing from what Manisha, Chetan, and Patel ji mentioned? Anything else that you would like to highlight? I think they've covered most of it, at least the Yes, very yes. basic and important part. But the two things that I want to share Sure. beyond what they said. See, Mm. it's a business, and at the end of the day, it's about money. So where is the money coming from? And money needs to come in bouts. Like a farmer has to buy seeds, money is needed. He has to put a fertilizer, money is needed. If Karkhana wants to support the farmers, money is needed. So this whole aspect of money and credits and how money can flow through the whole value chain in a way that it's available and rotated and is made liquid when needed is, Right. I think, another challenge that we didn't talk about, because no farmer today would tell that, yes, sugarcane growing has made me so rich that I don't want money, loans, anything, and I Correct. can work on my own. Correct. So somewhere, and I think that's the motive of AGFX also, is to see how the money comes in, how the flow is, and can it be modulated in a way that when it's needed, by whom it's made available. And I think if you're able to crack that, that might be a great solution. And the second thing is, all these challenges that we're talking about is about connecting the dots. I mean, if we know that, okay, he's going to start growing, so he needs, 30,000 single eye buds, then the chances of him using single eye bud, which is much better than the sets they use, would be much higher. But who's there who's connecting all these dots? Technology can make it possible, but nobody is, as you said rightly, there are a lot of WhatsApp groups and others who are giving farmers advisory. But are you also looking at the fact that you have to connect the dot with the input provider, you have to connect the dot with the other stakeholders? I think that's also a challenge in this industry, which is possibly not there in other industries like the finance domain, or a domain like, utilities, banking, etc. I think these are the two extra things that I would want Very to good. add. Thank you, Shikala. That's a very good perspective that helps us to wrap up the first section. Let me come to Ashutosh now, as we start with talking about, okay, so how should we address it? I mean, we've heard things around Ashutosh, and Ashutosh is a co-founder of the Agri Collaboratory. He's been a IT professional for 40 years, a very senior veteran, both from a technology standpoint and now, like all of us, delving into complex problems around agriculture. And I'd like him to share his thoughts. But as I do that, I'm just reminded, Ashutosh, of something that an ex-agri secretary in Maharashtra told me, right? And I'm going to repeat this for the benefit of everyone, saying that there are many dots, but there is no one to connect them for a full picture to emerge. Each one of us focuses on a specific dot, and that dot may be big or small, but they are still individual dots and they're still not connected. Connecting the dots doesn't need government policy. It doesn't need the government to come in and connect a Farmitopia with somebody else, with somebody else, with somebody else, right? As long as the dot owners are willing to be collaborative, I think we can make progress. Right. So, but with that, Ashutosh, I'll just pass it over to you. I think, Nipun, that was a very apt comment and very good segue for asking me that question. One of the key things that we have been driving with AGFX is getting the whole value chain together. So what we are talking about is that in any crop, and in this case, sugarcane, if every player of the value chain comes together, everybody will benefit. And one of the successful things that we have wanted to do here was to make sure that, first of all, identify who are the players who can make a difference, convince them that collaboration works, and
make it happen. So I was very glad to hear Chetan talk about farmers, who initially would require 5 visits, started calling him back. Patil Saab talking about how mill got interested, right? So how and Shrikala was talking about single eye bud. So how we get everybody together and say, look, if we do all these things, farmer will gain, mill will gain. One of the things that we started this program with was to go talk to individual representatives. So we had meetings with farmers, we had meetings with the mill, and in this case, it so happened that mill was also providing inputs to the farmer as a early cycle in the game and recovering it from the cane supply. And then we had, Farmitopia coming in and making sure that agronomy practices are put rightly. So we spoke to every player, got them in saying that this is what we want to achieve. Are you on board? Right? And like Chetan was calling out earlier, farmers in the beginning, they were excited, but they were not sure, ye ho kya raha hai yahan pe. Mill, fantastic job of going to each farmer and telling them that, look, this team who has come to help you, they're good people, they're bringing in smart ideas, it'll work for them, check them out. Right? So the mill has a long relationship with farmers. Patil Sahab has been in Nashik for a long time. So when the farmers heard from them, and then we had local person like Chetan, right? So all of them kind of work together. I'll stop there. Otherwise, it'll become a very long monologue from my side. Are there evidences you want to share, Shrikala or Manisha, on video? There were some evidences. Did you want to bring that up, or can we continue Yes, talking? we can. Adit, can you share the video of like right use of inputs? Through the use of right inputs at the right time, so how did they manage the crop, and and how they have reduced the like pest and diseases in their field? That's an important one, because I remember Shikala telling me, Manisha, that not a single farm out of that 550 acres has had any pest. You managed to identify, detect, and then prevent the pests from attacking the crop. Yes. And as Yes, exactly. he's bringing up the video, I just will give a little bit of background. Yeah, as pest and diseases come to the crop, there are what we call ETL levels. If you catch them early, you are able to resolve them with either non-chemical treatments or with a very small quantity. So what Chetan and team did was, not only did they talk to farmer, they helped them notice these kind of things. And if you catch them in, say, ETL 1, 2, 3, 4, 5, you catch them early, you're able to do that quickly. So like Manisha was calling out, and you will see that in the video, if we announced it early, caught it early, are able to do it without chemical pesticide and with a smaller quantity. So I think, is the video as on? Adit shows the video, you'll see that. UPI ॲपमुळे मला वेळोवेळी पाणी कसं द्यायचं, खतं कसं And द्यायचं, probably as Adit is हे bringing out बाबड्याचं the आहे. video, Anyway. Manisha, you might want to call out in this particular video what specific, is it red rot, is it mealybug, what is it that we are talking about? So we are talking about multiple different instances where the farmers were able to take advisory and resolve the issue when it was still manageable. Yes, sir. So I can share you the one of the case studies which UPI happened ॲपमुळे मला like वेळोवेळी the पाणी month of February in Nashik. So few farmers they have an attack of like initial infection of red rot in their fields. So when the Chetan and the team went on the fields and checked the plant foliage and all, so they have observed the diseases symptoms very early, like it was just 1 to 2%, and then initially we have suggested to go with the biological because the ETL level, as you mentioned, it was very low. So based on the ETL level, we have suggested an IPM practice, an integrated practice, and it was very low of using just a cow urine spray, which is like reducing the cost of cultivation for the farmer. So this we have done in mostly like 15 farms, I think,
and the farmers have seen the results within 8 days, and the spread of this disease was not there, and the disease which was observed in farms was also controlled. Thanks, Is the video on? Manisha and Nipun. Hold on. While No, hold Aditi on, hold on. still, Video came yeah. on. Hold on, Ashutosh. Oh, okay, very good. Video Yeah. came on, and then she switched it off because you were talking. So let the video go on. Yeah. Okay. UPI ॲपमुळे मला वेळोवेळी पाणी कसं द्यायचं, खतं कसं द्यायचं, हे UPI ॲपमुळे मला वेळोवेळी पाणी कसं द्यायचं, खतं कसं द्यायचं, हे भांबरे साहेब ते नियोजन देत असतात. आमचं ॲप कसं आहे, तुम्हाला कसं वाटतं? चांगलं वाटलं आणि आम्हाला वेळोवेळी कळतं की पिकाला काय हवं आहे आणि काय द्यायचं असं. मागच्या वर्षी तुमचा ऊस कसा होता याच्यापेक्षा? मागच्या वर्षापेक्षा हा ऊस चांगला वाटतोय आम्हाला. मागच्या वर्षी कीड रोग जास्त होते, या वर्षी या ॲपमुळे कीड रोग बी नियंत्रणमध्ये आणि शेतकऱ्याला कळतं की वेळोवेळी काय करावं लागणार आहे. काउटमुळे वेळोवेळी सगळे कीड रोग नियंत्रणात आहे. फुटवे पण चांगले आहे. फुटव्यांची संख्या पण चांगली आहे. टोपिया या कंपनीचे कर्मचारी आपल्या शेतात आले होते. त्यांनी मला या ऊसात वेलवर्गीय पीक जास्त झाले. त्यांनी मला उद्या Aditya, it was the pest and disease video. दिली आहे. त्यामुळे मी एवढ्या 2 Have you दिवसात played ड्रोनद्वारे स्प्रे करणार आहे. धन्यवाद. Yeah. Okay. So, Nipun, actually, I wanted to call out one very interesting point that I got to know. You know, this project that we are doing in Nashik has been through the support of HDFC Bank through their, small grants program and brought to us through Bharat Cares, right? So they also, obviously, when they did this, they wanted to check out what is happening on the ground. So they sent their auditor. And by the time the auditor went to the field for the first time, two very interesting things happened. And that kind of, like Chetan called out, he had to call farmer 5 times, and later farmers started calling him back. Two very exciting developments. Number one was that when farmers don't grow crop, it is, land is left fallow. So as they started seeing good results from whatever advice we were giving, farmers came back and said, we have some land, can we include in this program? So roughly about 55 acres of such land, which would have otherwise been left uncultivated, was brought in. So that was a huge endorsement of farmers agreeing and listening to us and, putting in effort in which they would have otherwise not done. Next thing that happened was when the auditor came and he was talking to farmers and checking out what is happening on the field. As he was talking to the farmers in our cohort, some neighboring farmers came along and said, this is very good. How can we become a part? So that was again a good word of mouth spreading, saying that, the farmers who agreed to join the program are onto something good. People are noticing the difference between yield and the crop development in their land. And they wanted to get included the next time. So these two, I thought I'll just quickly call out that thanks to the effort that Chetan and team did, we started seeing these kind of results, anecdotal stuff. Very good. Let me ask Shrikala, Manisha, do you have another video to share? Because, okay. So then, Shrikala, given in the interest of time, let's move on to the third section. But before that, anything else you want to add from the solution standpoint? Or should we move on to the third section? I want to talk about how do we scale this? How do we actually provide a bigger impact, right? We're right now. But let me just pause. Did you want to add something on the solution? So on the solution part, I just wanted to add that the solution, yes, is for the farmer. Farmer is the center of the solution, but it's also about a solution for people like Chetan. I mean, how would Chetan today, I think, manages 100, 200 farmers in one go. So 200 farmers
you can't even remember 200 names, and you're supposed to give advisory, and that too customized advisory. It needs a system and technology which can help his life better, make his life better. Karkhana, for an instance, Karkhana wants to know how many farmers, where is their land, how many acreage, when is the yield going to come, what will be the sucrose content in it, can you predict how much the yield will be? No, they need a system for that as well. So when you're talking about the solution, it's not, yes, it is the farmer solution and being customized and actionable, but it's also the periphery solutions around this. Karkhana is helping the farmer by giving inputs beforehand to encourage them to use inputs, but they're giving the standard value to everybody. So here, if you're able to Perfect. tell this farmer needs a little more of potash and this farmer needs a little more of zinc, then the solution makes sense because there's an economic sense to it. So I think when you're talking about the solution, these parts of the solution also become very essential for an end-to-end answer for the challenges Very that good. Very good. Patelji, you Nipun, wanted to say something? Nipun, I wanted to add one on this First, point. Patel. First, hold on. Ek minute. Patel. Since Shekala talked about that input, right? Very interesting angle. We were talking about entire value chain coming together. So not just the mill will know how the yield is going to happen. Input supplier can be told what kind of fertilizer will be needed when in which village. So they can plan their supply chain, logistics, etc., etc. So when we said that Perfect. every player in the value chain will get value, I thought this is a good point for me to introduce that angle as well. Yeah? Perfect. Over to you, Patel. Patel ji. सर इससे और एक ज्यादा फायदा कारखाने का भी हुआ और फार्मर्स का भी हुआ इस तरह से कि कारखाना का जो भी स्टाफ है वो जिस तरह से फार्मर्स से मीट कर रहा था उसके लिए पहले जो फार्मर रिस्पॉन्स देते थे उनके लिए लगता था चलो आज आ गए ये सिर्फ पूछ रहे हैं कि ये डाला क्या नहीं उतना ही पूछ रहे थे लेकिन अभी आने लगे के बाद वो जो कुछ उनको उनके मोबाइल पे ऐप डाला है वो जो कुछ उधर के फोटोग्राफ्स लेते थे उसका इंटरनेट की लेंथ मेजर करते थे तो ये जो कुछ एक्टिविटी उनके लिए बढ़ गई तो उनका फार्मर्स का टचअप उनका जो एक दूसरे के बजाय एक दूसरे के बजाय जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और एक गहरी सोच उसमें पड़ गई है कि फार्मर्स और उनका इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा होने लगा दूसरी बात है कि फार्मर्स भी नॉलेज में अपडेट हो गए जो कुछ वहां के ट्राइबल फार्मर्स थे जिनका एजुकेशन ज्यादा नहीं था लेकिन उस मोबाइल पे उनके हैंड में शुगर केन की जो कुछ नए नए जो टेक्नोलॉजी थी कि फार्म अभी ग्रोथ की स्टेज क्या है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए क्या करना पड़ता है अगर स्मर्ट डिसीज कुछ जगह पे दिखाई दिया तो स्मर्ट के लिए उनके लिए क्या करना चाहिए तो ये जानकारी उनके हाथ में हुए मोबाइल पे मिलने लगी जो पहले उनके लिए कुछ फार्मर्स कृषि सेवा केंद्र के पास जाना पड़ता था या किसी साइंटिस्ट को पूछना पड़ता था या कारखाने के पास जाना पड़ता था वो सब नॉलेज उनके हैंड में आ गया तो जो कुछ ट्राइबल फार्मर्स थे उनके लिए उनके क्रॉप के लिए उनके सजेशंस उनके हैंड में आ गए तो ये फार्मर्स बहुत खुश थे मैंने जो भी देखा कि फार्मर्स अपने आप बहुत खुश थे कि उनके लिए नॉलेज जो है शुगर केन का उनके हैंड में आ गया था और Very वो good. उसका इस्तेमाल कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा इसका भी फायदा है कि वो इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ा तो वो उसमें जो कुछ न्यूज आती थी वो भी पढ़ते थे और हमारे लिए वो बताते कि सर आपने ये हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे लिए ये बहुत अच्छा रहा हमारे नजदीक के फार्मर्स भी हमारे लिए ये आगे आते हैं हम एक साथ बैठ के ये सब देखते हैं तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन फार्मर्स के लिए भी हुआ कारखाने के लिए भी उनके स्टाफ के लिए हुआ उनका स्टाफ जो फार्मर्स के लिए जाता था वो टेक्नोलॉजी पढ़ के जाता था अभी उनके मोबाइल पे वो सब उसकी जानकारी आती थी तो उनके लिए ये सब इंफॉर्मेशन एक जस्ट लाइव चैट था Very good. Thank you, तो Patel ये ji. अच्छा ये उनके Thank you, Nitin Patel sir, ji. I just want to add one more example. So for this, if time is Go there, ahead. I can just add it. Yeah. We are running out of time, but go ahead, Manisha. I can't stop you. I can't say no to you. Okay. So like one of the solutions
solutions we have provided to the farmers, it was like immediate response we have given, and that also was possible through the technology. Why we are stressing out is like farmer, like as sir mentioned, that we have to go to the KVKs or any other educational institute if we have counted any pest or disease and all. For example, if there was a sudden climate change, and we have noticed in the Nashik that there was heavy rain during the tillering stage, and also during the just transition stage to the reproductive stage, grand growth phase. So during this stage, the hailstorms and then heavy rains have caused a lot of damage in some of the farms. So immediately within 24 hours, we have noticed it, and we have observed the damage level and all, and we have provided immediate solution. So with this, like immediate response to the farmers' problems which are caused by the climatic effect, or due to some fields we have observed that the salt content and the soil nutrient content was very low. So for them we have provided immediate solutions of soil improvement, and how the crop can be saved, and also improve the health of the crop and all. So through the technology it was possible to provide immediate solutions, and with the right solution also. I just wanted to add this point. Yeah. Thank you. Thank you, Manisha. Look, I think what I wanted to do actually was to talk about the next module, which is scaling. Let me quickly summarize in 30 seconds what was the essence of the solution that everybody spoke about, right? So we understood the challenges that the farmers are facing, understood the challenges that the mill is facing, as well as the other players around. Why the farmers are not able to learn or follow the neighbors, or even take advisory from the government or from other places, etc., is something which we also discussed initially. Then Ashutosh and Shrikala spoke a little bit about what has actually been implemented on the ground. And there are some important pillars of that solution. Obviously, there's a customized solution. It is targeted at each farmer, not targeted at a general community, but it is targeted at farmer by farmer. Number one. Number two, you bring in the value chain, you bring in everyone. As Patilji also said, the mill benefits in a different way, the farmers benefit, other ecosystem players benefit, etc. But the whole value chain coming together is a very important aspect. That's the second part. Third is really a combination of digital and phygital. You have people like Chetan on the ground who support the farmer, but you are backed up by a digital capability. So Manisha is actually sitting remotely very often, but she supports Chetan, who then, and the farmer has a farmer app. And I know 50, 60 farmers have actually come back and said, I don't need somebody's support. I can do it on my own, right? But the combination of phygital and physical and digital is a very powerful combination, which is actually the secret sauce also for scaling it as we go to the next section. Then, most importantly, is the fact that through this combination of digital, phygital, etc., you manage to keep away pest and disease, right? As Ashutosh said, you managed to get in new farmers into this mix, and farmers are generally happy. They want to participate in it. So these are some anchors to this. And a result of all these things, trust is starting to improve, right? It is still, trust is always takes time to build up, but trust is starting to improve. While earlier, the farmers never trusted the mill, or the mill didn't trust the farmers, or the farmer didn't trust the lender, or the startup did not trust anybody, etc., right? Or the farmer didn't trust anybody. That is changing. By everybody coming together on the same platform, they can see what information is available, and that trust is slowly building up. Now the question is, how do we scale this? I think what I'm going to do, because there's limited time and this subject is of huge importance, I'll ask Ashutosh, Shrikala, and Patilji and anybody else to maybe make some quick comments on how can we scale this, but then come back in the next session, right, and have a more deeper discussion and a conversation on how do we scale, because this is an important aspect. We are at 500 farmers or 550 farmers right now. I met Patil and I met the district collector in Nasik, and we spoke about how do we take it up to 15,000 farmers and 25,000 farmers in the larger district, right? But that is itself not enough. That's fine for one district. How do you take it across the country? How do you
take it to 500 sugar mills, etc. So that is a bigger conversation in terms of how do you scale it and how do you make it an entrepreneur-led thing. But let me invite in some quick comments from. Let's start with Ashutosh and then Shikala, then Patilji, I think etc. let's start with Patilji because he's on the ground and he's been talking to 2 or 3 mills. Okay, let's So he start with will Patilji. give आप the बताइए ground how level do and then probably I'll go little. how do we scale this? मैं मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज्यादा से जो कुछ स्टेक होल्डर्स है, इसमें पहले शुगर फैक्ट्री आती है, दूसरी बार नजदीक की जो कुछ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वो है, और तीसरा मेजर इसका स्टेक होल्डर फार्मर है. अगर कारखाने एक शुगर फैक्ट्री को 5 लाख टन का क्रशिंग का टारगेट होता है, तो उसके लिए अगर 15 to 18,000 फार्मर्स नीडेड है और उनके लिए वो इनपुट देते हैं, तो फिर कारखाना एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है कि वो फार्मर्स के लिए उतना लेंडिंग अवेलेबल कर दे, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कि वो अपना जो कुछ ऑल ग्रोवर्स है उसको, क्योंकि हर ग्रोवर के पास ये टेक्नोलॉजी जाने के बाद उसका 10 to 15 टन्स इंक्रीज होने वाला है, यील्ड इंक्रीज होने वाला है. अगर उतना यील्ड इंक्रीज होने के बाद उसको अगर 25 to 30,000 का अगर मुनाफा हो रहा है, तो उसमें कारखाना एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है कि जो ये लेंडिंग अवेलेबल कर देगा टेक्नोलॉजी का, और फार्मर्स से वो उसका गन्ना यील्ड आने के बाद उससे वो वापस ले सकेगा. जैसे इनपुट की रिकवरी करते हैं इनपुट सप्लाई की, वैसे अगर उसने किया तो ये दोनों की अगर हमने उन दोनों ने जिम्मेदारी ली तो इसका स्केलिंग बढ़ाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा. और तीसरी बात है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वहां के अंदर आती है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कुछ वहां का जो कोई डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, अगर उन्होंने भी इसके लिए अगर इन्वॉल्वमेंट ली, तो ज्यादा से उनके जो कुछ शुगर केन ग्रोवर्स है उनके लिए यील्ड बढ़ाने के लिए एक अच्छा वेस्टेज हो जाएगा, और तीनों के लिए इसका फायदा रहेगा. लेंडिंग जो देते हैं उससे इसकी वो बेहतर उत्पादन करने की वजह से उसका कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगा. वो जो कुछ लेंडिंग लिया है वो वापस करने के लिए कारखाने का यील्ड बढ़ेगा, और एक ही जगह पे फार्मर्स के यहाँ से ज्यादा यील्ड आने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे उससे प्रभावित होगा. तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि शुगर केन ग्रोवर, शुगर के मिल और कुछ लेंडिंग जो कुछ इंस्टीट्यूशन है उनका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ले सकते हैं. और तीसरी बात, जो कुछ वहाँ की कृषि विज्ञान केंद्र है या एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा, ये जो तीनों कंपोनेंट्स उस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर ये एक्सपेरिमेंट के लिए उनको भी इन्वॉल्वमेंट लिया तो एक अच्छा एक परिसंस्था, अच्छा इकोसिस्टम वहाँ डेवलप हो सकेगा. गवर्नमेंट भी होगी, लेंडिंग इंस्टीट्यूट भी होगा, शुगर मिल भी होगी और फार्मर भी होगा. हर एक का इस्तेमाल, हर एक का मोटो जो है वो इससे सफल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है. Thank you, Patilji. So, if I can quickly summarize what he said for the benefit of everyone. So, he's saying there are three big important stakeholders. One is the grower, which is the farmer himself. So, the farmer is a very important aspect in this whole thing. The second is the buyer, which is the mill in this case. But the buyer could be somebody else. For if you're working on some other crop, it will not be the mill. There'll be a different structure. But the buyer plays a very important role, in this case, the sugar mill. And the third is the flow of money and the financial institutions who can provide money, as Shikala said, when it is needed. The farmer needs, sugarcane, by the way, is a 14-month cycle, 14-month crop, 12 to 14-month crop. So the farmer needs money through the cycle. And whenever the farmer needs money, if the money is available, then the farmer will be able to take the right practices and actually improve the yield. So these are three big anchors. And an additional point that Patilji said is that KVKs and the knowledge institutes, the people who are providing knowledge and information, etc., to the farmers, the capacity planning जैसे बोलते हैं हम लोग, पाटिल जी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एग्री ऑफिसर्स हैं, मिल के एग्री ऑफिसर्स हैं, उन सबको अगर मिला के, if you can include all of them and improve
capacity for everyone and training and everything, it will benefit. So those are few important points from Patil. Shikala, why don't I come to you and then we'll go to Ashutosh on your thoughts on how do we scale this? Okay. To make it very quick, there is no shying away from digital and tech. I mean, that's the Sure. only way we can scale. So that is needed. But the caveat is it cannot be done without a physical or a phygital model being there. Because the Chetan is there, that presence is making a lot of difference. Yes, And that's yes. why a phygital model. And there has to be a path through transition. Say you start with 50% Chetan and 50% digital. And then you move on to say, no, 80% can move to digital and come to a state where 95% can go digital, but there has to be a physical to it for sustainability and scale. Second point is empowering farmers to become self-sustainable, being able to run it by themselves, being able to do a part of what Chetan is doing so that Chetan can handle more and more and more people is another way in which we can go ahead. And this is the only way we can tackle real problems like like soil degradation and climate change and quick response requirement, because that's what will make it sustainable, my point of view. So your last point, which is the farmers becoming self-sustainable on their own, I'll keep it along with the growers, as Jagdish Patil said, the first one, which is the farmers have to play a big role. I'll combine it with that, right? So the farmers will certainly have to play a big role, both to be able to pick up the knowledge and also leverage digital as they go forward, gradually as they go forward. Your earlier point that you made, which is digital per physical, is spot on. I think we need to invest in building 1 million Chetans, as an example, right, across the country, not just for sugarcane, but across all crops. How do you do that? How do you train them? How do you hire them? And then how do you build the business model to pay them, right? How does the farmer ultimately farmer has to pay for it? The money has to come from the beneficiary of the solution, right? But thank you, Shrikala. Ashutosh. Yeah, I think you talked about money at the end, and I just wanted to pick up the point there that money is a great motivator. And like Correct. Patilji was talking about, 10 to 15 tons extra yield for the farmer, good money for the farmer, right? That 10 to 15 tons over 15,000 farmers becomes a huge supply of cane to the mill. So mill also gains, right? Correct. Now, the difficulty is that, like I think Chetan was calling out in the beginning, nobody believes you when you go in the start. So it takes a couple of cycles for farmer to warm up, listen to you, see the results. So I think we might need a cycle or two to show that this approach is not only economically viable for the farmers and the mill and the supplier and the lender and whoever comes in, and people who provide agronomy services also get paid for it, right? So everybody in the value chain benefits, but we need a couple of cycles to prove it, and then it becomes self-sustaining. So if we do Very simple good. math at the mill level, at the farmer level, at the bank level, everybody gains from this. And our whole attempt is to show that how it is not a grant-driven government giving money, government giving or somebody else giving funding. It is every player in the ecosystem saying, this is for me, it is for my benefit, it is working, it's sustainable. And technology is playing that role to make it happen for me. So I think that's the way we'll scale it. Perfect. So in summary, between what three of them said, and let me just pause and see, चेतन जी आप कुछ और कहना चाहेंगे? इसको स्केल कैसे करें हम 25,000 फार्मर्स में कैसे ले जाए? हाँ तो कुछ आइडियाज हैं आपके पास में? शुक्रिया सर मुझे बोलने का मौका दिया। आपका वीडियो, हाँ अब बोलिए। आवाज आ रही है? अभी आ रहा है आपकी, अब आवाज आ रही है। तो जो अभी पाटिल सर ने जो पॉइंट लिया था उसमें मैं एकदम बिल्कुल एग्री हूँ कि अगर फार्मर ने गन्ना लगा दिया, उसके मतलब जो लेबर रहता है उसको बोल दिया तू पानी भर, पानी दे गन्ने को, तो फार्मर मतलब एक बार गन्ना लगा दिया तो वो ध्यान नहीं दे रहा है उधर गन्ने के ऊपर। लेकिन उसमें दो कैटेगरी है सर जी। अभी एक कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अगर उन्होंने लगा दिया
लगा दिया। आगे दूसरी कैटेगरी जो ये अभी टेक्नोलॉजी में आ रही है, अभी जो नए फार्मर आ रहे हैं, जो यंग लड़के अभी फार्मिंग में उतरे, जो यंग लड़के फार्मिंग में उतरे, अगर मैं एक पॉइंट लेना चाहता हूँ वाटरिंग के बारे में। अगर पिछले मतलब 6-7 दिन पहले बारिश हुई थी हमारी इधर, तो मैं 2 फार्मर के पास गया कि आपके गन्ने में बारिश का पानी कुछ जमा हुआ है क्या, निकालना पड़ेगा अपने को, कि उसमें अपनी फसल खराब हो सकती है। तो उसमें से मेरा एक फार्मर ने सुना कि हाँ आप बराबर बात कर रहे हो, तो अपने को पानी निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद पूरा दिन भर, मैं उधर रहा, मनीषा मैडम जी को मैंने कॉल किया था, वीडियो कॉल, उधर बारिश में पानी निकाला। उसके बाद उसका अभी आज के डेट में उसका यील्ड अच्छा है। अब जो दूसरे को मैं बताने गया था, उसने भी मतलब ऐसा नहीं मेरे को रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन उसने वो वर्क किया नहीं। आज उसको डिफरेंट दिख रहा है। वो मुझे आज खुद बोल रहा था कि तो साहब जी तुम जो बोल रहे थे एकदम बराबर था। क्या बढ़िया मतलब कहानी है चेतन जी। नहीं नहीं, मतलब फार्मर अभी फार्मर से कनेक्ट ऐसा करना। फार्मर अभी क्या है, छोटे बच्चे जैसा रहता है, उसको कैसा समझाना है अपने ऊपर रहता है। सही बात, सही बात, सही बात। ये बहुत उसको बढ़िया उसको एग्जाम्पल आपने मतलब दिया उसको चेतन। क्या बताना पड़ेगा, वो कितने, उसको उसका माइंड में क्या है अपने। अगर उसके मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, उसके फील्ड पे मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है। मैं ऐसा नहीं कि अभी जा रहा हूँ, मैं कंपनी का मैं साहब की तरह टाई लगा के जाऊंगा, वैसा नहीं, उसके साथ बैठता हूँ। हाँ पहले उसका सुनता हूँ, आप बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी मैं जो बेंच मार्क ले रहा हूँ, वो मतलब ऐसा नहीं कि पहले से मेरे पास कुछ आइडिया थी। जिस फार्मर ने एकड़ में 50-60 टन लिया है, और जिसने 25-30 लिया है, 50-60 वाले का आइडिया मैं सामने वाले को पास करता हूँ कि देखो वो फार्मर ने ऐसा किया था, अपने को भी करना पड़ेगा। मेरे को नहीं मालूम, मैं भी किसी से आइडिया वो पास कर लेता हूँ। नहीं चेतन जी, आप एकदम बढ़िया कह रहे हैं। आपने जो एग्जाम्पल दिया बहुत बढ़िया था। अ, ये आप जैसे लोग, हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। अगर हम लोग को एक्सपैंड करना है 25,000 फार्मर्स को चेतन, तो आप क्या करेंगे? आप तो अब मतलब अभी आप 100 फार्मर्स को देखते हैं, 100, 150, 200 फार्मर्स को देखते हैं, बट जी एक्सपैंड जी। कैसे करें, स्केल कैसे करें? मतलब सर एक बार फिर से पूछिए मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मैं बोलूं कि ये आप नासिक भर में करिए, ये पूरा जो काम आप कर रहे हो ये पूरे नासिक में करिए, 25,000 फार्मर्स के साथ करिए, तो आप कैसे करोगे? आप लोगों को तो हायर करोगे, कुछ और लोग चाहिए होंगे, जी जी, आपको जरूर बहुत सारे जरूर। लोग वो चाहिए तो होंगे आपको। टीम वर्क के साथ ये सब कैसे आप काम होगा, लाओगे? टीम वर्क के साथ काम होगा। हाँ, ये आप कैसे, हाँ आप कैसे हायर करोगे उनको, कैसे करोगे, ट्रेन कैसे करोगे उनको आप? उसको उनको हायर मतलब अभी अभी जो भी मैं अभी जो अब आज मैं फील्ड फील्ड Yeah. So we've lost Chetan, but I want to point out here, Nipun, Is the there, fact that he's there, he's there. Shikala, hold on. चेतन जी हाँ बोलिए। जी जी। जो जो आज आज अपन जो जो 200 फार्मर में जो काम कर रहे हैं, वो अपन 20,000 फार्मर भी वही काम कर सकते हैं अपन, वही आइडिया कैसे? लेके। उसमें आपको टीम टीम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टीम बनना चाहिए। फार्मर से कम पूरा 8 घंटे कनेक्ट रहना चाहिए। फार्मर फार्मर का ग्रुप बनाना चाहिए। अभी पकड़ लो कि आज मैं 48 विलेज मेरे अंडर में आते हैं। हम्म तो 48 विलेज मेरे अंडर में आने की वजह से ऐसा नहीं कि मैं 40 विलेज में वन टाइम में नहीं जा सकता, हम्म हम्म लेकिन मैं किसके यहाँ जाता हूँ, वो लोगों की मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि देखो उनके यहाँ, वो लोगों से भी जिनकी जानकारी नहीं थी उनसे भी मैं बात करवा देता हूँ। तो ऐसा कनेक्टिंग सही चालू है। बात, सही बात। ये इसके बारे में और फिर से बात करेंगे चेतन जी, पर आपके आइडियाज अच्छे हैं। श्रीकला, यू वांट टू ऐड समथिंग क्विकली टू व्हाट चेतन वाज सेइंग? No, no, I'm amazed at Chetan and his confidence and what has been created in the village. I mean, करेक्ट, he's from the करेक्ट। village and with a basic education. And today he's telling that I'm able to speak to farmers and farmers listen to me. That itself is scaling. यस, यस, We would have had a Manisha to go and do all of this. But Chetan is able to do it and he says, I'm doing it for 200. Is speaking of यस, scale by itself. So यस, I can't यस। stop myself from No, no, saying that. I Yeah. agree. It's very, very inspiring
इंस्पिरेशनल श्रीकला, वेरी इंस्पिरेशनल। चेतन जी, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत नमस्कार हमारी तरफ से चेतन जी। बट एनी लास्ट कमेंट्स एनीबडी? I Thank think you, सर the most यही telling comment to एक me सेकेंड, was एक from सेकेंड, पाटिल, Chetan. पाटिल जी, हाँ. सॉरी, तो आप और पाटिल हमेशा अपना हाथ एक I साथ ही know, I उठाते हो। know. We are so excited. और नहीं, पाटिल जी आप ये बोलिए पहले। हाँ, ये यही बात है कि ऐसे अगर एक चेतन 200 फार्मर्स के पास जाता है, हाँ, अगर ऐसे 100 चेतन हो जाएंगे तो फिर ये अपने आप 20,000 फार्मर्स तक हम जा सकते हैं। करेक्ट, लेकिन करेक्ट, इसके लिए अगर जैसे कि अभी फार्मर्स से इस ये एक साल उनके साथ काम करने से चेतन जी का और फार्मर्स का लगाव बढ़ने लगा है। करेक्ट, ऐसे ऐसा ट्रस्ट करने के लिए कुछ और स्टूडेंट चेतन जैसे लोग अगर इसमें काम करने लगे, जैसे कि कारखाने के भी कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अभी, लेकिन पहले उनका वो पहले से कर रहे थे लेकिन उनका उतना ट्रस्ट नहीं था। अभी हम हमारी सिस्टम में आने के बाद उनका ट्रस्ट बढ़ने लगा, फार्मर्स का और उनका कोलैबोरेशन बढ़ने लगा, उनके लिए फार्मर्स नए जुड़ने लगे, एरिया बढ़ रहा है कारखाने का। ये भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट उस कारखाने को हो रही है। थैंक यू आशुतोष। Yeah, no, I had three anecdotal points that I wanted to call out. One was farmers bringing in 55 acres of fallow land. Second, अरे when वो auditor went, farmers coming out and say, "हमको भी ले लो." We also want to join in. And the third thing which I heard today from Chetan, saying that pehle Chetan used to go to farmers, now farmers call him and this thing. And one more करेक्ट, करेक्ट, incident which करेक्ट, Manisha didn't call was cane officer, Chetan and farmer calling Manisha to say, "वीडियो देखो मैडम कितना अच्छा हो रहा है." राइट, सो instead of Manisha calling them and say मेरे को दिखाओ आप लोग क्या कर रहे हो, they calling to show देखो कितना अच्छा हो रहा है. So those are all very good anecdotal evidence that things are working on ground. Very good. In fact, I was at Nasik with another program conducted by Sayadri Farms, and one of the things I said in that program as well, जो आप फाइनेंस की बात कर रहे थे, आप लोग सब बात कर रहे थे, श्रीकला, you were saying, Patil ji also was saying, etc. I want the bank to chase. I want the lender to run after the farmer instead of the farmer having to go after the lender, right? I want the farmer's visibility. I want the confidence in the farmer to be so high that the lender says, मैं आपको पैसा देने को तैयार हूं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या उगाएंगे, इस साल क्या उगाएंगे आप, right? I would like to support you. I would like to give you money. So that's where we should try and aim for. Yep. How do we flip the whole Absolutely. agricultural engine on its head? Yes. But देखिए, this scale part is very important for all of us because that is what we are trying to do. Let's continue this in the next community circle conversation. There are 7 anchors that were identified: farmer, which is the grower, the financial institution, the lender, the mill, which is the buyer, the KVK, which is the information dissemination, the capacity building, the government, etc. Shrikala said digital plus phygital. So digital with a physical face to it, right? Pure digital doesn't work. Pure physical will not scale. For scaling, you need digital, but for trust, you need the physical aspect. So that's a very important part. Ashutosh mentioned the commercial aspect. There has to be a commercial motivation for everyone. We have to make it entrepreneurial led. And finally, Ashutosh also spoke about patience, right? Doing the cycle, repeating the cycle a few times, building that whole model. The 30 tons or 25 tons जो अभी हो रहा है, to take that back to 60 tons will not happen in one cycle. It'll take 2-3 cycles. But imagine 25 to 60 or 65 or 70 or 75, you can actually triple the farmer's income. Not only the farmer's income, but triple the value chain's income. So with that, thank you so much all for joining in. Thank you for participating. And thank you everyone for listening in and those who will participate in it in the future. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye, sir. Thank you.